Good morning to everyone. Sorry for the delay. So, we were discussing the application of Newton's laws, okay, and I have told you that Newton's laws generally have an application which is with something else, right? So, we have seen the concept of string constraints. Now, if you don't have a situation where you have to apply string constraints, that's good. And if you have a situation where you do have to apply string constraints, then you already know how to apply it, right? Now let me make it clear what I mean by this. So what is the meaning of string constraint? एक relation मैं आपको बता चुका हूँ. Now maybe that relation is non-intuitive. Maybe that relation, because I could not prove that relation, maybe you are not comfortable with it. So I will tell you another relation. Okay, I will tell you another relation. I will tell you another way to arrive at the same relation. So again, I'm talking about string constraints, but this is a different approach to string constraints. So we have a string which is wrapped around a pulley like this, and the two ends of the string have two blocks attached to them like this. Okay. Now, by definition, a string is inextensible. Okay, it is inextensible. That means the length of the string can never change, and it is unbreakable. That means it can never break. Okay, inextensible का actual मतलब वो भी हो गया, but I just wanted to write it down separately. So if the string cannot break and if the string is unbreakable, then what should be the string constraint? Right? The relation that we have arrived at. How do I arrive at? Using geometry now. No virtual work, no concept which I cannot prove. This is very, very simple geometry. So basically what I want to do is I want to find the length of the blue line that I have drawn, because the blue line is the string. So what I do is I consider the ceiling as the reference point. This is very important. आप 5th floor पे हो अपने घर में और आपने पेन को जमीन के ऊपर पकड़ा हुआ है. Supposing you drop your pen. What is the potential energy of the pen when you are holding it? And what is the potential energy of the pen when it hits the floor? Well, we know that the gravitational potential energy is given by mgh. M is the mass, g is acceleration due to gravity, but what is h? H is the height. Height from where? So if you say that you are going to measure the height from the ground, then the height of the pen is, I don't know, 1 meters or 1.5 meters, jitna high aapne usko pakda hai. However, I can also measure the height of the pen from the ground, right, from the surface of the earth. And from the surface of the earth, you are already 5 floors up. So therefore, the height of the pen is something like 15 meters. Right? I can also measure the height of the pen from the center of the earth.
and in that case the height of the pen would be something like 6,700 kilometers plus 15 meters, something like that. So the reference point from where things are being measured is very important. So here I would like to take a fixed point as a reference point. A point which I know is fixed, that is what I would like to take as a reference point. So here the fixed point is the ceiling on which the pulley is suspended. I know that the ceiling cannot move, right? Or at least as far as I know, the ceiling cannot move. So from the ceiling, I will say that look, the distance of the center of the pulley is xp. This distance I measure is this distance I measure, and it comes out to be some value which I will call xp. Then I measure the distance of the block 1. So this is block 1, this is block 2. I measure the distance of the block 1 from this reference point, and I find that this distance is x1. And then I measure the distance of the block 2, and I find that the distance is x2. So in terms of x1, xp and x2, I would like to write down a relation between the length of the, I would like to write down, sorry, the length of the blue line in terms of these quantities x1, x2 and xp. Can anybody tell me what is the length of the blue line from this point to this point? What is the length of the blue line between these two yellow dots that I have drawn? And it should be obvious. It is not very difficult. Now, अब तो हम केवल measure कर रहे हैं ना, तो ये distance होना चाहिए x1 minus xp, and from this yellow dot to this yellow dot, this distance must be x2 minus xp, right? So therefore, I can write the length of the string is equal to x1 minus xp plus pi r, which is the length of the string which is wrapped around the pulley, right? Plus x2 minus xp. So L I can write as x1 plus x2. No, radius of the pulley is not given, but what I do know is that the radius will have, the pulley will have some constant radius, which I have assumed to be r. x1 plus x2 minus 2xp plus pi r. Okay. Now comes the real question. And the real question is, out of these four quantities that I have written, x1, x2, xp and r, which quantities are variable and which quantities are constant? अगर ये blocks move करते हैं तो इसमें कौन सी quantity हमेशा समय के साथ constant रहेगी and इसमें कौन सी quantity समय के साथ vary करेगी? Okay? So we know that x1 and x2 will be variable, क्योंकि block 1 और 2 जब ऊपर नीचे होएगा तो x1, which is the distance of the block 1 from the ceiling, will change, and x2, which is the distance of the block from the ceiling, will also change, right? But xp, which is the distance of the ceiling from the fixed pulley, will never change, and r, which is the radius of the pulley, will never change with time.
So if I were to differentiate this with respect to time, d by dt on both sides, d by dt on both sides, then what would I get on the left hand side? What would I get on the left hand side? What can you tell me about L? Everybody forgot about L. L is a variable or is it a constant thing? Is a variable or is it a constant? L है क्या चीज? What is L? What is L? L is the L is the total length of the string. L is the total length of the string. And मैंने just ऊपर देखो आपने लिखा हुआ है that the string is inextensible. स्ट्रिंग का लेंथ समय के साथ चेंज हो ही नहीं सकता. So since L is equal to a constant, in fact this is the source of the string constraint. So this implies that dl by dt is equal to 0. Okay. Since xp is equal to constant, right? dxp by dt is equal to 0, right? What is x1? What is x1? X1 is the distance of block 1 from the ceiling, right? So what will be dx1 by dt? What will be dx1 by dt? X1 is the distance of a particle from a fixed point. And this is changing with respect to time, right? तो dx1 by dt क्या मेरे को दे देगा? Rate of change of distance of block 1 from the ceiling, which should be the velocity of block 1, right? I hope ये सबको समझ में आ रहा है. This is not difficult. So here I will get 0 is equal to v1 plus v2 plus 0. ये स्टेप आया सबको समझ में? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आस्क मी. All I have done is I have from a fixed point designated distances to the various objects that are there in the problem, and then I have found in terms of these designated distances the length of the string, and then I have differentiated the equation exploiting the fact that the length of the string is constant. Therefore, the rate of change of length of the string must be equal to 0. ये आया सबको समझ में? So therefore, I get v1 plus v2 is equal to 0. And now what I want to do is I want to differentiate with respect to time again. और अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास क्या आएगा? If I differentiate this equation with respect to time, what will I get? I will get a1 plus a2 is equal to 0, which tells me that a1 is equal to minus a2, right? a1 is equal to minus a2, और a1 is equal to minus a2 का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होएगा और इन दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होएगा, राइट? Let me
So this was an obvious thing. Let me apply the same principle. Let me apply the same principle for let me apply the same principle for एक मिनट रुको, मैं आंसर दे रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ. So treat this as an example. Can you carry out the same procedure? Can you carry out the same procedure and tell me a relationship between acceleration of block 1, 2, 3? I will answer the questions that some students are asking from this. हाँ, इसमें अब मुझसे क्या क्या पूछ रहे हो भाई? Why x1 is not constant? String cannot stretch. x1 is the distance of block 1 from the ceiling. At a future point of time, it may happen that block 1 is somewhere here and block 2 therefore is somewhere here, and in this case both x1 and x2 have changed. ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा. Why did we differentiate the equation? I did not understand the reason behind it. Well, the fact is that I want to use this property that the string's length is inextensible, right? This means that the length of the string remains constant with time. जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट. हाँ, रेडियस मैटर नहीं करता है सुदीप, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा ना डिफरेंशिएट होके. तो because the length of the string does not change with time, and I can actually write the length of the string in terms of the distance of block 1 and the distance of block 2 from the ceiling plus other terms. If I differentiate with respect to time, I know that the differentiation of this guy is equal to the velocity of this guy. I know that the double differentiation of this guy is equal to the acceleration of this guy. I know that the double differentiation of this guy is the acceleration of this guy. And ultimately, we are trying to find a relationship between velocities and acceleration of the block using string constraint. Therefore, I have to differentiate to go from position to velocity, and then again I have to differentiate to go from velocity to acceleration, right? तो अगर आपको एक पार्टिकल का पोजीशन मालूम है, राइट, तो आप अगर उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको उस पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. This is where you grow up. This is where you grow beyond the class 10 syllabus. कि मेरे को वेलोसिटी निकालना है तो मैं उसको बोलूं कि अच्छा नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं.
No, distance upon time is a poor definition of velocity. It only works in a very small subset of conditions. It only works when the speed of the particle, the velocity of the particle is constant. तो अब अगर मेरे को वेलोसिटी निकालना है, मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. आया समझ में ये? Is this understood? Okay. Next question is A1 minus A2 is the same relation we got using the string constraint. Yes, yes, it is. I am giving you the relation again for the string constraint, but वहां पे हमने जो मेथड यूज किया था उसका मैं कुछ प्रूफ नहीं दे पा रहा था. यहाँ पे मैं बेसिक ज्योमेट्री यूज करके एग्जैक्टली वही प्रूफ, एग्जैक्टली वही रिलेशन वापस से ले आ रहा हूँ. राइट, ऑफ कोर्स ये आप क्वेश्चंस में यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो वाला मेथड ज्यादा शॉर्ट है. राइट, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सेविंग टाइम. We want to understand the question, we want to do the question, but we want to do it in the least amount of time. कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हम लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर निकाल, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं. हाँ प्रतीक्षा बिल्कुल सही है. नहीं नहीं राधिका, एक क्यू क्या है? महक बिल्कुल सही है, जोहेब गलत. So let me first write down the distances. So this distance I will call xp1 and this distance I will call xp2. इसमें कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है, या दोनों वेरिएबल हैं, दोनों फिक्स्ड है? xp1 xp2 कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है? xp1 is fixed and xp2 is variable because जो नीचे वाला पुली है वो मूव कर सकता है. राइट, नीचे वाला पुली is movable. And then let me say that this distance is x1 and then let me say that this is x2 and let me say that this is x. हाँ करो हार्दिक, करो करो. मैंने केवल डिस्टेंसेस वो कर दिए. अब जोहेब इसमें क्या है ना, जोहेब इसमें क्या है कि नीला स्ट्रिंग अलग है और हरा स्ट्रिंग अलग है, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किए. तो नीले स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड रहेगा, वो एक रिलेशन आपको अलग से देगा, और हरे स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड रहेगा, वो एक रिलेशन अलग आएगा. हाँ करो करो, आई विल गिव यू 2 minutes टाइम, डू इट. वेरी गुड शिवेन, बस. So the length of the blue string will be equal to यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
प्लस ये पाई आर प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिस्टेंस है वो होएगा x1 माइनस xp1 प्लस पाई आर। वेरी गुड, हाँ ये पहला रिलेशन है। नहीं, xp का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा बच्चों, xp1 का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, xp2 का डिफरेंशिएशन vp2 आएगा, है ना? गुड गुड, करो 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 करो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। So L1 length of the blue string is x1 minus xp1 plus pi r, right? And I hope now you're beginning to see that this pi r does not really matter. So after some time, I'm going to forget about the pi r. I'm going to write only xp and x1 के terms में। हाँ ऋषिक, तो ये एक आ गया, दूसरा निकालो, प्लस xp2 minus xp1, and if I differentiate this with respect to time, d by dt of this, d by dt of this, I will get, हाँ गुड आर्यन, यस। अब जोहेब, जो पहला इक्वेशन आपने मेरे को दिया और जो दूसरा इक्वेशन आपने दिया, मेरे को तो रिलेशनशिप ओनली बिटवीन a1 a2 a3 चाहिए ना, मेरे को ap2 नहीं चाहिए उसमें, मेरे को आई डोंट केयर अबाउट p2। ओके, सो व्हाट विल यू गेट? बहुत बढ़िया चैतन, गुड। 0 is equal to v1 minus 0 plus 0 plus vp2 minus 0, ये डिफरेंशिएशन हुआ पहले वाले टर्म। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, if we differentiate this again, right, remember that the question is asking us for finding the relationship between acceleration, और हमने तो velocity निकाला है, तो differentiate तो करना ही पड़ेगा। Again remember that for us, हाँ खुशी, हाँ AP नहीं चाहिए मेरे को, A1 चाहिए ना खुशी, वहाँ पे ये सेकेंड वाला रिलेशन आपने गलत निकाला। तो मैं डिफरेंशिएट जब करूंगा, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे भी हम अब क्लास 10 से ऊपर ग्रो करेंगे, हमारे लिए एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, इट इज नॉट change in velocity over time. Change in velocity over time gives us average acceleration. We are always interested in instantaneous acceleration, which is the differentiation of velocity. So this will give me 0 is equal to a1 plus ap2. Take relation here. Now let me find the length of the green string L2. Length of the green string must be this part plus ये circle, half circle, plus this part. So the left वाला part must be, नहीं ऋषिक गलत है ये, left वाला part must be this length minus this length. So L2 must be equal to x2 minus xp2 plus pi r, नहीं सत्यम गलत है, प्लस जो थर्ड साइड का लेंथ, जो जो राइट साइड का ग्रीन स्ट्रिंग का राइट साइड वाला लेंथ है, दैट इज x3 माइनस xp2। हाँ हार्दिक बिल्कुल सही है। सो आई गेट दिस एज लेंथ ऑफ, बिल्कुल सही वेदांत, L2, राइट। नाउ
इसमें कौन से टर्म्स, हाँ जोर सही, इसमें कौन से टर्म्स कांस्टेंट है और कौन से टर्म्स वेरिएबल, इसमें कौन से टर्म्स कांस्टेंट है और कौन से टर्म्स वेरिएबल। नहीं सत्यम, अभी भी गड़बड़ है। AP2 नहीं आना चाहिए ना सत्यम, हमें अभिजीत, हमें AP2 नहीं चाहिए, हमें A1 चाहिए, A1। इसमें कौन से टर्म्स कांस्टेंट है, कौन से टर्म्स वेरिएबल। प्लीज टेल मी व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स इन द सेकंड इक्वेशन एंड व्हाट आर द, हाँ धनुष सही है, व्हाट आर द वेरिएबल टर्म्स इन द सेकंड इक्वेशन। L2, हाँ सही है, L2 is constant and pi r is constant and x2, हाँ मैं बता रहा हूँ, x2, x3, xp, all of them are variable terms. So I get on differentiation 0 is equal to v2 minus vp2 plus 0 plus v3 minus vp2. Right? Please remember that xp2 is not a constant. That second pulley जिसपे ऊपर ग्रीन स्ट्रिंग हमने डाला हुआ है, वो पुली मूवेबल है, वो पुली ऊपर नीचे मूव कर सकती है। राइट, हाँ अब सही, सत्यम अब सही है। So if I differentiate this again, I am going to get a relationship between the acceleration of the objects, and I will get 0 is equal to A2 plus A3 minus 2AP2. But this tells me that AP2 is equal to minus A1, right? And if AP2 is equal to minus A1, I get 0 is equal to A2 plus A3 plus 2A1. एंड इफ यू रिमेम्बर, जो हमारा टेंशन एक्सेलरेशन वाला मेथड था, वो दो सेकंड में ये रिलेशन आ जाता है, राइट। यू डोंट रियली हैव टू डू दिस वन पेज कैलकुलेशन, यहाँ पे आप यू आर एंडिंग अप विद द सेम थिंग, ऑल्दो दिस इज much more understandable than than that, लेकिन अगर हम उसको याद रखेंगे तो we will arrive at the solution much faster. And I will show you, I cannot show you the exact proof, but I will show you I will show you a sufficiently good proof when we do work, power and energy. Okay, ये आया सबको समझ में? So can you answer this question? Question number 1. Find velocity of block 2.
सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। So the answers that I have received are 3, -3, 5, 4, 10, 1, 0. -4. Okay, so now you see the problem समझ में आ रहा है किसी को? Why is this question different from the last question? Why is this question different from the last question? Why is this question different from the last question? Because because XP is not constant. XP vary कर रहा है. Very good. Yes, yes, yes. So just for the sake of drawing the diagram, okay, because diagram is the same as before. So this distance is XP. This distance is X1. This is XP2, XP1. This is टेढ़ा मेढ़ा line बन रहा है, sorry for that. And this is X3. रिलेशन तो वही आएगा फिर से, और तो कुछ आने नहीं वाला है. L1 ऊपर वाली स्ट्रिंग, हाँ मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ. L1 is equal to X1 minus XP plus XP2 minus XP1. XP1, XP यहाँ भी लिख रहा हूँ, मतलब मेरा है XP1. अगर मैं इसको दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो d by dt ऑफ L1 तो 0 होना ही होना है, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता है. 0 is equal to dx1 by dt v1 हो जाएगा, माइनस vp1 आ जाएगा. वो पिछली बार में xp1 कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा था. इस केस में 0 नहीं हो रहा. प्लस vp2 आएगा माइनस vp1 आएगा. राइट, एक रिलेशन मेरे पास ये आ रहा है. दूसरा रिलेशन L2 इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम जो एक्सप्रेशन वहां लिखा था वही एक्सप्रेशन यहाँ भी लिखना है. L2 इज इक्वल टू x3 minus xp2, x3 minus xp2 plus x2 minus xp2. And now I can differentiate this d by dt, and I'll get 0 on the left hand side. v3 minus vp2 plus v2 minus vp2. Let's put in the values. Since यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, since vp1 is equal to plus 5, v1 is equal to minus 2, and v3 is equal to plus 4, right? These are the values. तो पहले वाले रिलेशन में मुझे क्या मिलेगा? पहले वाले रिलेशन में मिलेगा 0 is equal to minus 2, right, plus vp2 minus 2 vp1 minus 10. और इस वाले में क्या मिलेगा? 0 is equal to v3
which is plus 4 minus 2 VP2 plus V2, right? तो मेरे को क्या निकालना है, VP2 की वैल्यू कितनी आई, 12। 0 is equal to 4 minus 24 plus V2. V2 is equal to 20 meters per second. प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, प्लस मतलब कि ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्लीज नोटिस यहाँ पे कुछ न्यूटन्स लॉज या कोई कुछ नहीं लग रहा, केवल ज्योमेट्री से हम बता दे रहे हैं। मासेस की वैल्यू जो भी हो, अगर ये पुली और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 का वेलोसिटी है, राइट, अगर ये पुली का और ब्लॉक 1 का और ब्लॉक 3 का वेलोसिटी है, देन this will be the velocity of block 2. सर मैंने एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई की, मेरा आंसर एग्जैक्टली हाफ आ रहा है इसका। मैंने रिलेटिव लगाने की कोशिश नहीं, रिलेटिव नहीं लगा पाएगा मैंने रिलेटिव, क्या किया बहुत कंफ्यूजिंग मैंने हो क्या जाएगा। किया कि 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो मैंने सारी वेलोसिटीज में 5 मीटर पर सेकंड माइनस कर दिया, तो और उसको ऐसा जिम कर लिया कि 5 मीटर पर सेकंड के बाद वो स्टेबल है, तो मतलब वो जो ऊपर वाला पुली है वो मूव नहीं कर रहा, तो होल सिस्टम जो है वो एक जगह पे है। फिर मैंने वही वाले दो इक्वेशंस लगा के किया, मेरा आंसर 10 आ रहा है। आई थिंक मैंने कहीं पे 2 मिस कर दिया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं यूज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि हम यूज कर क्या रहे हैं, हम ये यूज कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 कांस्टेंट, और उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हैं, बट उसमें फिर और एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। I don't want to. सर लेकिन रिलेटिव लगाने के लिए अगर हमने एक अलग से फ्रेम रख लिया जिसमें जो खुद भी ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंफ्यूजन उसमें नहीं क्रिएट होना चाहिए। अब जो शौनक ने किया, मुझे भी एग्जैक्टली हाफ आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है। हाँ, तो तुम दोनों लोगों ने जो बीच वाली पुली है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड प्लस VP2 लिखा। हाँ सर, 5 प्लस 3 लिया, फिर नीचे का 4 प्लस 5 लिया, ऊपर का 5 माइनस 2 लिया। नीचे का क्या लिया फिर v प्लस 2 का v लिया, v प्लस 5 लिया, फिर 3 का 4 प्लस 5 लिया और 1 का 5 माइनस 2 लिया। 4 प्लस 5 क्यों लिया? हाँ सॉरी, 4 माइनस 5 लिया, -1 लिया। हाँ। और पुली का क्या लिया? सेकेंड पुली की वेलोसिटी क्या ली? और मैंने पुली का नहीं लिया। हाँ पुली का नहीं लिया मैंने। हाँ, तो सेकेंड वाले पुली का, नीचे वाला जो पुली है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी से करना है तो ब्लॉक 1 की वेलोसिटी नीचे 7 हो जाएगी। पुली की वेलोसिटी जो सेकेंड वाली पुली है उसकी वेलोसिटी v प्लस 5 हो जाएगी, नीचे की तरफ माइनस लेना पड़ेगा उसको, और ब्लॉक 3 की वेलोसिटी हो जाएगी -1।
और ये सब करने के बाद जब आप ब्लॉक 2 की वेलोसिटी निकाल लो तो आपने तो किसी और फ्रेम में निकाला है ना, हाँ सर। अब वो वापस से ग्राउंड फ्रेम में निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा सर वो? आप अपने मूविंग फ्रेम में ले जाने के लिए सारी वेलोसिटीज में -5 कर रहे हो, तो वापस से ग्राउंड फ्रेम में लाने के लिए +5 करना पड़ेगा। यस सर, समझ गई। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ रिलेटिव्स। रिलेटिव से करना है तो इसका 7 लेना पड़ेगा, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ 1 लेना पड़ेगा और इसका वेलोसिटी लेना पड़ेगा v+5 नीचे की तरफ। और जब इसका फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी राधिका कैसे निकालते हैं? आप ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, आपको पेड़ की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो तू तो उसी डायरेक्शन में है ना, तू तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट जा रही है, तो आपको तो 30 दिखाई देगा ना। इसीलिए दैट, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू रिलेटिव, because it will create a lot of confusion. And in any case, Aryan, if you find the relative velocity, if you find the velocity of block 2 in the relative frame, तो आपने तो रिलेटिव फ्रेम में निकाला है ना, तब तो आंसर वो गड़बड़ है ही है। आपको तो ग्राउंड फ्रेम में निकालना है ना, तो पहले सारी वेलोसिटीज को रिलेटिव फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से तो सारी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी निकलेगी उसको वापस लाना पड़ेगा। अच्छा, यू आर थिंकिंग कि हम सीधा वो फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब हाँ ठीक, वो भी कर लो। तो उस केस में आएगा 2v1 plus v2 plus v3 is equal to 0। ये आएगा -14 plus v2 -1 is equal to 0। v2 is equal to 15। 15 आया v2 की वैल्यू, और वापस ग्राउंड फ्रेम ले जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 5 उसमें। तो v2 with respect to the ground will be equal to 15 plus 5, which is equal to 20 meters। आ गया? यही करना चाह रहे थे ना आप लोग? शौनक, प्रतीक्षा, आर्यन, आया समझ में? Now I want to tell you a third method. Okay, so I have told you the method of virtual work वाला weird सा, जिसमें कि हम summation of dot products is equal to 0 करते हैं। The second method that I have told you is that you actually physically work out the lengths of the string in terms of the distances of various pulleys and blocks, particles which are connected to each other by a string, and then you differentiate this and you exploit the fact that the length of the string is inextensible. Length is going to be constant with respect to time. There is a third method as well, and I want to, because we are now discussing this, so I want to clarify this. So method 3, ये तीनों मेथड सेम चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, ये तीनों मेथड
केवल एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है, एंड दैट स्टेटमेंट इज दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज. Okay, so method 3 is that the velocity or acceleration components of two ends of a string along the string must be same. Right now, what is the meaning of this? राइट, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं which are connected to each other by a string like this, and let's say that the blocks have velocities v1 and v2. मैं एक बहुत ही जनरल केस ले रहा हूँ, राइट? You'll notice that the velocities are random. Then the velocity components of the two ends of a string along the string. Okay. पता नहीं मैंने कैसे क्या लिख दिया है. Along the string must be same. तो अगर ये ग्रीन लेंथ को सेम रखना है, अगर ये ग्रीन लाइन का लेंथ सेम रहना है, तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं अलोंग द स्ट्रिंग या एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स, दे मस्ट बी सेम. इस ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे है v1 cos थीटा 1, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे है v2 cos theta 2. So by definition, by the fact that the string is inextensible, we should have this relation. अगर v1 cos theta 1 v2 cos theta 2 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? अगर v1 cos theta 1 v2 cos theta 2 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? String will become slack. Okay, that is also generally not allowed. कभी कभी हो जाता है, but ये string slack हो जाएगी. और मैं आपको बता रहा हूँ कि string हमेशा taut रह रही है. तो v1 cos theta 1 cannot be greater than v2 cos theta 2. और अगर v2 cos theta 2 v1 cos theta 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? अगर v2 cos theta 2 v1 cos theta 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? If v2 cos theta 2 becomes greater than v1 cos theta 1, then the string will break. Okay, the string will break, and that is not, again, that is not allowed. Or the string will elongate, that is not allowed. So we must have v1 cos theta 1 is equal to v2 cos theta. When to use these three methods? When to use these three methods? Well,
A1 T1 summation A1 dot T1 is equal to 0 is the go-to method for pulley block systems. It is the fastest method, although we don't understand the origin of the equation. या आया कहाँ से equation ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन it is the go-to method for pulley block systems. अगर string किसी एंगल पे है, एंगल्स इन्वॉल्व हो गए, टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रिंग्स, then method 3 is the best way to solve. अगर मोशन ऑफ ब्लॉक्स और स्ट्रिंग के बीच में एंगल है, तो मेथड 3 is the best way to solve. Okay, and method 2 is really I think the only place where method 2 will be applicable is I've shown here when all the pulleys are moving, when no pulley is fixed. Standard pulley block problems, method 1, summation A1 dot T1 is equal to 0. Problem where the motion of the block is along the same direction as the string, no angles are involved, but all the pulleys are moving, right? Then we apply method 2. Angles involved ho gaye, then we apply method 3. So method 2 is very rare. Generally, you will end up using method 1 and method 3. हाँ, एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक मिनट. So find the velocity of the middle block. Please notice that no masses are given. No masses are given. So the answer will only be in terms of theta and u. यहाँ पे न्यूटन्स लॉज नहीं लगाना. हाँ, सही है. नहीं, गलत आ रहा है.
जो मैंने अभी बताया उसको करना है। सेम स्ट्रिंग कहाँ है? सेम स्ट्रिंग कहाँ है? सेम स्ट्रिंग तो ये है ना, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, right? The length of the green string must remain constant and the length of the yellow string must remain constant, right? So I will do this for you. Look carefully what I do. मैंने आपको मेथड 3 क्या बताया? मेथड 3 is something which is again a restatement of the fact that the length of the string must remain constant. So what you are supposed to do is that you are supposed to look at one end of the string and you are supposed to look at the other end of the string, and since this string is inextensible, therefore all I'm saying is that the velocity of these two black dots along the string must be the same. Velocity of these two black dots along the string must be the same. और मैंने आपको इसमें हिंट भी दिया। हिंट क्या है? अगर एंगल्स इन्वॉल्व हो गए तो मेथड 3 यूज करना है। यहाँ तो एंगल आ गया, थीटा आ गया, तो मेरे को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v। ये अजम्पशन कहाँ से आया? ये अजम्पशन कहाँ से आया? ये अजम्पशन सिमेट्री से आया। अगर ये दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट, अगर ये दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों सेम एंगल है, so the tension in the green string will be like this, tension in the yellow string will be like this. The horizontal and these two tensions must be equal because there is absolute symmetry in the problem. So the horizontal components of these tensions must cancel out and the vertical components of tension must add up. Therefore, this block can only move vertically up. नहीं पार्थ, गलत. So we have a block who has a velocity v. This is v that we want to find out. This is v that we want to find out. नहीं यार, हम गलत कर रहे हैं. And this is the string. Okay. This is the string. This is the string and this end of the string has a velocity u. Forget about the blocks. Look at the velocity of the ends of the string. And it is given that this angle is theta. So the statement is that the component of velocity along the string must be equal. नहीं, must be equal. हाँ, टू क्यों आ रहा है भाई? यानी टू की जरूरत ही नहीं है. So the component of this velocity is v cosine theta along the string. And the component, I don't need to find any component of u because u is already along the string. So we must have v cos theta is equal to u. V is equal to u upon cos theta. This will be the velocity of, this will be the value of
यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटीज है ना। माइनस प्लस तब लिखा जाता है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें मालूम हो। अरे बता तो रहा हूँ, माइनस यू नहीं होएगा, सुन मेरी बात को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। अरे एक्सिस कहाँ टिल्ट कर दी मेरे भाई, क्या? सर वो v cos थीटा में आपने एक्सिस तो टिल्ट किया है ना? क्या क्या एक्सिस टिल्ट की है? क्या एक्सिस कहाँ आ गया? एक्सिस बनाया नहीं जब मैंने। सर तो फिर वो v cos थीटा कैसे हुआ? अगर आप कंपोनेंट उसका लिख रहे हैं उस स्ट्रिंग पे, तो फिर उसको आप एक्स एक्सेस अज्यूम कर रहे हैं ना? हाँ चल, मैंने एक्सिस टिल्ट कर दिया, खुश। नहीं, सिमिलर सिमिलर ब्लॉक से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने तो केवल एक स्टेटमेंट बोला है कि ये जो ग्रीन स्ट्रिंग मैंने बनाई है, इसका लेंथ कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। तो अगर इसका लेंथ कभी नहीं चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी u है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी u होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं भाई जोहेब, जो थीटा के साथ साइड चिपकी रहती है वो हमेशा कोसाइन थीटा होती है। सर जब ये बीच वाला ब्लॉक एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा तो फिर वो वापस नीचे आएगा क्या? क्या मालूम यार क्या करना है। हाँ वैसे आएगा, क्योंकि जब टॉप पे पहुंचेगा तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कभी वर्टिकल फोर्स लगा नहीं सकती, बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कभी वर्टिकल फोर्स नहीं लगा सकती है, तो उसके ऊपर केवल mg एक्ट कर रहा होगा। mg की वजह से वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर जाएगा। तो फिर वो ऊपर नीचे होते रहेगा बार बार। हाँ यस यस। जब स्ट्रिंग और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के बीच में एंगल होएगा, तो हमें थर्ड मेथड यूज करना है। मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं इसका मैं इसका एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बट यू डोंट, सो यू आर रियली ओवर थिंकिंग इट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। यू ऑल यू हैव टू डू इज फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट वहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। All you have to remember is that the component of the velocity of the two ends of the string along the string must be same. Same नहीं हुआ तब लोचा हो जाएगा, string टूट जाएगा। So this is block 2 which has a velocity v2. This is angle theta 2. This has velocity uh, theta 1, block 1. So find velocity of very good, Zohaib, yes.
हाँ भाई, नहीं पसंद ना, गलत किया है, थोड़ा सा और सोच, मतलब आधा सही आधा गलत। यस यस, ओनली द मैग्नीट्यूड, ओनली द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। बहुत सही प्रतीक्षा, यस, गुड बात। हाँ भाव्या, माइनस माइनस छोड़ दो, माइनस हटा दो, बाकी सही है। अब मैं थोड़ा सा गलत किया है, cos थीटा 2 गायब कर दिया मैंने। सबका बिल्कुल सही है, cos बिल्कुल सही है। हाँ, now you are getting the hang of it. So if this velocity is v1, then this component must be v1 cosine theta 1. This component must be v2 cosine theta 2. These two components must be same. V1 cos theta 1 is equal to V2 cos theta 2. So V1 is equal to V2 cos theta 2 upon cos theta 1. कोई बात, कोई बात। हाँ, direction is not important because I'm only asking you I'm only asking you the velocity of block 1, right? So the velocity of block 1 का direction तो मैंने पहले ही बना दिया, arrow तो मैंने पहले ही बना दिया है, तो डायरेक्शन तो मैंने लिखा ही हुआ है, आपको तो केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। और अगर मैंने एरो नहीं भी बनाया होता तब भी इट इज क्लियर दैट, नहीं तब नहीं क्लियर है, पीछे भी हो सकता था, बट हॉरिजॉन्टल तो रहता ही, राइट? तो ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द मैग्नीट्यूड। भाई शिवेन, ऐसा क्यों है? v1 cos theta 1 is equal to v2, नहीं नहीं प्रतीक्षा, सिस्टम चेंज हो रहा है समय के साथ, ये एक मोमेंट इन टाइम पे दिया हुआ है। Now, I don't want to do this, but I feel that I must. So you may ask me the question कि ये जो भी ये दो क्वेश्चन किए हैं अभी हमने, I have told you the fastest method. I have told you the fastest method, and I'm always interested in the fastest method. However, there are methods which are very lengthy, and quickly before we go, I want to show you this method. So you may say to me that, सर ये तो समझ में आया नहीं, ये क्या किया कि यहाँ पे जो ब्लॉक है और यहाँ पे जो ब्लॉक है, वेलोसिटीज इक्वेट कर दी, जो भी, but the length of the string remains constant, right? So if you want another method of doing this, I'll show you this method, but lengthy है, complicated है, differentiation बहुत use होएगा, so please gear up, see carefully. This is going to be heavy. So this velocity is u. इसका मतलब ये हुआ that if I talk about
this length, let's say that this is L, then what can you tell me about dl by dt? What is dl by dt? It is the rate of change of the length of the string on the left hand side. Rate of change of the length of the string on the right hand side. This should be equal to how much? This should be equal to not 0, no, this should be equal to u. क्योंकि ये जो लेंथ है ये मैं u मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा हूँ. ये वाली लेंथ u मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है. तो ये वाली जो लेंथ है ये u मीटर पर सेकंड से कम हो रही है. राइट? ये आया समझ में? इज दिस अंडरस्टूड? ये जो L मैंने बनाया है, तो मैंने ग्रीन स्ट्रिंग की जो लेंथ बनाई है फ्रॉम द ब्लॉक टू द पुली, it is changing at the rate of, this length is changing at the rate of u meters per second, because I'm pulling the block on the right hand side with u meters per second. So the vertical portion of the string, अगर उसकी लेंथ अभी 1 मीटर है तो 1 सेकेंड बाद उसकी लेंथ 1 प्लस यू मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और 2 सेकेंड बाद 1 प्लस 2 यू मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. और ये वाली जो लेंथ है लेफ्ट हैंड साइड में L जो मैंने बनाया है, ये अभी L है, हाँ माइनस होएगा, हाँ गुड, यस माइनस होएगा. ये जो लेंथ है लेफ्ट हैंड साइड में L, ये 1 सेकेंड बाद L माइनस यू हो जाएगा, 2 सेकेंड बाद L माइनस 2u हो जाएगा. राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या? क्या नहीं समझा प्रतीक्षा? क्या नहीं समझा? what is not understood? मैंने ये बोला कि अगर ये ब्लॉक को मैं u मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहा हूँ तो ये वाली जो लेंथ है दिस विल इंक्रीज बाय u मीटर पर सेकंड, एंड ये वाली जो लेंथ है इट विल डिक्रीज बाय u मीटर पर सेकंड. Therefore dl by dt, the rate of change of this length from here to here will be equal to u. आया अभी समझ में? Okay. Now, can anybody see a right angle triangle somewhere? Can you see a right angle triangle here? So there is a right angle triangle here, जिसका हाइपोटेन्यूज L है और ऊपर वाला लेंथ L साइन थीटा है, नीचे वाला लेंथ L कोसाइन थीटा. Can you tell me what is so special about L cosine theta and what is special about L sin theta? What is special about L sin theta and what is special about L cosine theta? L sin theta remains constant. ब्लॉक ऊपर जाता जाएगा लेकिन ये horizontal distance हमेशा same रहेगी. And what is so special about L cos theta? So d by dt of L cosine theta will be equal to the velocity of the block. L cos theta का rate of change, L cos theta का rate of change will be equal to the velocity of block 1. So velocity of block 1 is equal to d by dt of L cosine theta is equal to dl by dt cosine theta minus L sin theta d theta by dt. ये मैंने क्या किया है? ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है यार.
differentiate the first expression, leave the second alone. Differentiate the second expression, leave the first alone, right? Now, d by dt of L sine theta should be equal to 0, since L sine theta is equal to a constant, does not change. So d by dt of L sine theta means dl by dt sine theta plus L cosine theta d theta by dt is equal to 0. So dl by dt की वैल्यू तो u है, हमें मालूम है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा d theta by dt is equal to minus u sine theta divided by L cosine theta. And I'll place this d by d theta value here. So I'll get v is equal to u cos theta plus L sine theta into u sine theta divided by L cos theta. ये कैंसिल हो गया. I'll get v is equal to u मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या आएगा, cos square theta plus sin square theta upon cos theta. Therefore v is equal to u upon cos. Now this is a very lengthy and very very uncomfortable method. Okay. In fact, I want you to forget about it. But the fact is that I can use various geometric properties to arrive at the same conclusion as I have told you in method 3. तो यही काम मैं इस क्वेश्चन के लिए भी कर सकता हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना सबको यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा. I can do the same thing here, right, where the differentiation of the length of the base will give me the velocities of the two blocks. I can do the same thing here, but it becomes very tedious, it becomes mathematically very challenging, and we don't want to do this. I don't think anybody would want to do this in an exam. This is just मेरे को बाजू वाली बिल्डिंग में जाना है, तो मैं पहले यहाँ से मैं पुणे जाऊँ, फिर वापस आऊँ बाजू वाली बिल्डिंग में, हाँ भाई पहुँच गए. तो so this is very tedious. However, I just wanted to show that using the fact that the length of the string remains constant, okay, you can do or you can carry out any mathematical operation as long as the string ka length remains constant. You should get the answer about velocities of connected blocks, acceleration of connected blocks. Now, HCV में you are not going to use this. Okay. HCV में एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से शुरू में ऑब्जेक्टिव में दिया है, जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है. तो हम मेथड 3 से करेंगे इसको, ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे. Okay, so this is all about string constraints, and in the next class I will talk about something called wedge constraints. Okay, so objects are of various, बहुत सारी बुक्स हैं.
So objects are connected to each other by strings. They must move in a certain way. Objects are in contact with different surfaces. They must move in a certain way. And when objects move in contact with surfaces, they are called wedge constraints, right? And we'll discuss them. Tomorrow morning. हाँ, लेक्चर 3 खत्म हो गया. करो. HCV भी आप पूरा कर सकते हो. कुछ चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे कराते रहूंगा, but HCV you can do now. In fact, it would be my suggestion to do HCV first and then you do the assignments. हाँ बिल्कुल भाई, मुझसे 2 लेक्चर आगे रहो ना. That is the ideal situation. Do lecture 4, do lecture 5. चलो, okay. I will see you tomorrow.